Hello everyone, welcome to today's mathematics class. In the last video we have started the chapter 7 coordinate geometry, and in that we have done the first concept in coordinate geometry, that is distance formula. What is the distance formula? When the 2 points are given and we want to know the distance between the 2 points, then this formula helps us. You know what is the distance formula? The distance formula is given by square root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. This is the formula. We have derived this formula also. Okay. Now see, next question is, we are doing today question number 3. Question number 3 is determine if these 3 points are collinear. Collinear points, you know what are collinear points? Points which lie on a line. Points which lie on same line. Like this. These 3 points are lying on same line, hence they are called collinear points. Now we have to check whether the points are collinear or not. Now what is the method to check that the points are collinear? See this diagram carefully. As these 3 points are collinear, so what we can say? We can say that AB plus BC, what it gives us? See, AB plus BC. If I add the two distances, what it gives us? It gives us distance AC. So this is the concept we are going to use to check whether the points are collinear or not. As 3 points are given, I'll name these 3 points A, B and C. So I'll find 3 distances AB, BC and AC. Right? If the sum of any two distances, remember any two, we are not saying that AB plus BC should come equal to AC. No, maybe C may lie between A and B. Then, so what is the concept? If the sum of any two distances is equal to the third distance, then we will say the points are collinear. And if this is not the case, then it's very obvious they are not collinear. Now see, let us do this question. Solution. Firstly, I'm naming these points. First I'll name it A, second B and third C. So how many distances we can find? 3 obviously. First between A and B, second between B and C, third between A and C. So I'll find all the 3 distances. Let's find first of all AB. What is A? 1, 5 and B. You will take these 2 points. Okay. When you will find the distance BC, then you will take B and C only. When you find distance AC, you will take A and C only. Now we want to find the distance between A and B. Firstly, assign x1 y1 and x2 y2. This is must. Remember this. Now by distance formula, the distance AB is given by, firstly you will write the formula, right? y2 minus y1 whole square. Okay. So let's fill the values of the required coordinates. x2 is 2 minus x1 is 1 whole square, y2 3 minus 5 whole square. 2 minus 1, 1 square plus 3 minus 5, minus 2 square. 1 square is 1 plus minus 2 square. Remember square is always a positive quantity. So minus 2 square is also 4. So what we get finally? The distance AB, we got root 5 units obviously. Now we'll find the second distance. Which one? BC. So take these 2 points B and C. B is 2, 3 and C is minus 2, minus 11. So take this one as x1, y1. x1, y1, x2, y2 will keep on changing. Remember this, they are not fixed. So B and C I have assigned x1, y1 and x2, y2 also. Now distance BC. Now I will not write the formula again, because the same solution we are doing, once only you will write the formula. Okay? Then you will simply put the values. So by
here you have to mention this, that this formula is called distance formula. ठीक है. Now under root of x2 is -2 minus x1, that is 2, square plus y2, that is -11 minus 3 square. ठीक है. So -2 gives us -4. This is -14. Square, remember, positive always. 16 plus 196. ठीक है. So this is 212 units. Root of that. Let's find the factors of 212. If we can simplify it, 253. So done. We can simplify it further. 2 into 2 into 53. So what we can finally write this as 2 times root 53 units. So this is distance BC. I got AB, I got BC. Now what I need? The third distance. Which one? Now the distance AC. So let us find distance AC. Then we'll check whether the points are collinear or not. So I'll write here AB. AB was root 5. Now find distance AC. A 1, 5, C -2, -11. So assign x1 y1 and x2 y2 also. So distance AC, don't write formula again, remember we have written already, so we will not write it again and again. X2 -2 minus x1, 1 square plus y2, that is -11 minus y1, that is 5. So -3 square plus -16 square, again being square, the output will be positive. So finally we got root 265. Now I got all the three distances. If you see these distances, all the three distances are a bit unusual type of distances. How? Why I'm saying unusual? First, AB was, firstly all three are in roots. ठीक है. AB root 5, BC 2 times root 53. Unlike terms are these actually. So AC under root 265. So all are unlike terms. Remember what we need to check, whether the points are collinear or not. So what we need to see in that, if the sum of the two distances comes equal to the third distance, then we'll say collinear, otherwise they are not collinear obviously. ठीक है. Now we cannot add any of the two distances directly because all these are unlike terms. These are irrational numbers, remember. ठीक है. And they are not added like this. The one way is just find the value of root 5 up to 1 or 2 decimal. Root 5, it comes approximately 2.23. SI, it will come 7 point something and it will come 16 point something. So in no case you will get the sum of distances, two distances equals to the third one. Here we cannot add these distances. So simply what I will conclude from here, I'll say here sum of no two distances, sum of no two distances equal to the third distance. Here sum of no two distances is equal to the third distance. So what we'll say now, so therefore the points are collinear or not? Are not collinear. The points are not collinear. So this is how we'll do the solution of this question number 3. Now we'll see question number 4. Question number 4, check whether the points, these 3 points are given, are the vertices of an isosceles triangle. This is the question. Okay. So firstly, name these points as A, B and C. Okay, it's up to us.
Remember 3 points, and how many distances we can find between them? 3. First and second, second and third, and first and third. 3 distances we can find. So name these points firstly. First find distance AB. Take A and B. Assign the must step is assign x1, y1, x2, y2. This is must. And then between the 2 points, which formula gives us the distance? The distance formula. What is that? Root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. You know, we have done the derivation of this formula also. Okay. Now just fill the values, simplify it. Remember in this case here, when we do y2 minus y1, 4 minus 2, this is like this, 4 minus 2. So minus into minus gives us plus. That's why I have written here plus. Directly I have written 4 plus 2. Okay. So 1, 6. So 1 plus 36, root 37. We got the distance AB, the length AB is under root 37. Same way we'll find BC, right? B and C I have written. Firstly, सबसे important, assign x1, y1 and x2, y2. डिस्टेंस फार्मूला में ये चीज़ सबसे काम की है. हमेशा जब भी डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करें, ऑलवेज असाइन x1, y1 एंड x2, y2. ये बड़ा ज़रूरी है. मैक्सिमम बच्चे इसमें नहीं करेंगे तो आगे सॉल्यूशन में यू विल गेट नो क्रेडिट. ठीक है. सो बी वेरी वेरी केयरफुल while applying distance formula. So now distance BC, I will not write formula again because I have written already the same solution this is. So don't write it again and again because I'm applying here distance formula thrice. 3 times apply कर रहा हूँ. तो once you will write, then सीधा values ही put करना है. So same way x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. I got root 37. Calculations I have done here. Right? The same way third distance, that is AC. AC. x1 y1 x2 y2. I'm repeating it again and again. यही सबसे main step है इसमें. इस पे focus करना है ध्यान से. Right? So formula x2 minus x1 whole square plus y2. एक चीज मैंने और बताई थी इस फॉर्मूला में, अगर आपको ध्यान हो तो. व्हाट इज द फॉर्मूला? स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. अगर गलती से x1 माइनस x2 होल स्क्वायर लिखा जाए और y1 माइनस y2, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, यू नो, बिकॉज a माइनस b होल स्क्वायर इज सेम एज दैट ऑफ b माइनस a होल स्क्वायर, एज द टर्म्स आर नॉट सेम, a माइनस b एंड b माइनस a, बट द स्क्वायर्स आर सेम. हेंस अगर यहाँ x1 माइनस x2 भी लिखा जाए तो डरने की बात नहीं है, ठीक ही होता है वो. ठीक है. नाउ आई गॉट ऑल द 3 डिस्टेंसेज, ऑल द 3 लेंथ्स. AC रूट 37, BC रूट 37, AC केम 2. ठीक है. कैलकुलेशन की है मैंने यहाँ पे. AC केम 2. तीनों डिस्टेंसेज आ गए. अब बच्चे क्या करेंगे, जल्दी से कंक्लूड कर देंगे कि 2 साइड्स इक्वल हैं, तो ऑब्वियसली ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हुई. यहाँ पे सीधे नहीं आना है. इसने पूछा है कि क्या ये आइसोसेलेस ट्राइंगल की वर्सेस हैं या नहीं. 2 साइड्स इक्वल करके आइसोसेलेस ट्राइंगल? नो. पहले यहाँ नहीं जाना है, पहले तो ये भी तो देखना है कि वो ट्राइंगल भी बन सकती है या नहीं. फर्स्टली वी नीड टू चेक वेदर द ट्राइंगल इज पॉसिबल और नॉट. वो कैसी ट्राइंगल है वो तो बाद का क्वेश्चन आता है. फिर पहले ये देखना है कि वेदर द ट्राइंगल इज पॉसिबल और नॉट. रिमेंबर द ट्राइंगल्स प्रॉपर्टी. व्हाट इज दैट? Very important. You are studying it from class 7 onwards. That sum of 2 sides of triangle. Sum of 2 sides of triangle should always be equal, greater than, sorry, not equal to, should always be greater than the third side. 2 sides का sum हमेशा third side से बड़ा होता है अगर वो triangle possible है. अगर ऐसा नहीं है तो triangle कभी बनती ही नहीं है. ठीक है. Like I am taking one example here. See. ट्राइंगल बनती है अगर 2 साइड्स का सम तीसरी से बड़ा होता है. क्या 6 + 2 8 ग्रेटर देन 4. ठीक हो गया. ठीक है. एंड देन बाकी यहाँ पे 6 + 4 ग्रेटर देन 2 बड़ा हो गया थर्ड साइड से. ठीक है. बट सी हियर 2 + 4 6. इज इट ग्रेटर देन द थर्ड साइड? नो. हियर दी सम ऑफ दीज 2 साइड्स इज नॉट ग्रेटर देन द थर्ड साइड. सो जब भी आप ट्राइंगल बनाने की इसको कोशिश करेंगे, ये ट्राइंगल बनेगी ही नहीं, क्योंकि वो आर्क्स ही इंटरसेक्ट नहीं करेंगी एक दूसरे को. अगर आर्क्स ही इंटरसेक्ट करेंगी तो ट्राइंगल कैसे बनेगी? तो ट्राइंगल की बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि 2 साइड्स का सम तीसरी से हमेशा
बड़ा होता है। तो पहले ये चेक करना है कि क्या ये ट्राइंगल बनी है यहाँ पे या नहीं, आइसोसेलेस है नहीं है, वो तो बाद की बातें हो गई। ठीक है, अब देखना ध्यान से इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। रूट 37 अप्रॉक्सीमेटली 6 पॉइंट समथिंग, 6.1 ले लेता हूँ थोड़ी देर के लिए मैं इसको। ठीक है, 6.1, दिस इज ऑल्सो 6.1, दिस इज 2, राइट। सो दिस इज ए बी, 6.1 मैंने अप्रॉक्सीमेटली है, नॉट एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है इसकी, ध्यान रखना, जस्ट टू चेक दैट कंसेप्ट। अब देखना, पहले ये चेक करना कि ट्राइंगल बनी भी कि नहीं बनी। बनी है तो फिर सीधा प्रूव हो चुका है कि वो आइसोसेलेस है, राइट। 6.1 प्लस 2 8.1 ग्रेटर देन 6.1, ठीक हो गया। 12.2 ग्रेटर देन 2, डन। ठीक है, इधर से 8.1 ग्रेटर देन 6.1, डन। सब में वेरीफाई हो रहा है इसमें कि दो साइड्स का सम हमेशा तीसरी से बड़ा आ रहा है। इफ दिस इज दिस इज द केस, यू नो ट्राइंगल इज पॉसिबल। ये चीज करके बताने की जरूरत नहीं है आपको, मैं सीधा हम यहां पे लिखना है हियर the sum of two sides is greater than its third side। ठीक है, तीनों केसेस में 3 केसेस बनते हैं, फर्स्ट केस, सेकंड केस, थर्ड केस, तीनों केसेस में ये प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है, दैट मीन्स ट्राइंगल बनेगी थर्ड साइड। सो देयरफॉर ट्राइंगल इज फॉर्म्ड। तो ट्राइंगल बनी है तो फिर दो साइड्स तो उसकी इक्वल आ ही चुकी हैं। ऑल्सो ए बी इक्वल टू बी सी, वो तो ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। मैक्सिमम बच्चे ये वाला पार्ट स्किप करेंगे इसमें, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है सॉल्यूशन में। ठीक है, बड़ा क्विकली जंप करते हैं आप सॉल्यूशन पे, पहले उसके डेप्थ में जाना है कि है क्या, वो कंसेप्ट क्या है, फिर आएगा उस पर। सो देयरफॉर वी विल से triangle ABC is an, which type of triangle this is, isosceles triangle। I hope so कि ये दोनों क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो चुके होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है then please don't hesitate to ask। Thank you।